Hello guys, welcome back to my new video. In this video we will study about rule 24, that is towing and pushing. Coming to point A, a power driven vessel when towing shall exhibit first, instead of the light prescribed in rule 23A first or A second, two masted light in a vertical line when the length of the tow measuring from the stern of the towing vessel of the outer end of the tow exceeds 200 meters, three such line in a vertical line. Second, side light. Third, a stern light. Fourth, a towing light in a vertical line above the stern light. Fifth, when the light of the tow exceeds 200 meter, a diamond shape where it can best be seen. So इसे अच्छे से समझने के लिए let's see a picture. रूल 23 में हमने पढ़ा था कि जो पावर ड्रिवन वेसल है उसका एक मास्टर लाइट होना चाहिए, बट जो टोइंग वेसल है दैट इज ऑल्सो अ पावर ड्रिवन वेसल, सो उसके पास दो मास्टर लाइट होंगे और अगर वो टो कर रहा है एंड दैट इज अबव 200 मीटर्स तो उसके 3 मास्टर लाइट्स होंगे और उसके साइड लाइट्स होंगे और उसके स्टर्न लाइट्स होंगे. एंड ऑल्सो इट इज टोइंग वेसल, सो स्टर्न लाइट के ऊपर एक येलो लाइट होगा which will show that it is towing vessel. और अगर ये towing vessel 200 मीटर से above टो कर रहा है तो एक डायमंड शेप होगा जिसे हम शिप के किसी ऐसे प्लेस पे रखें ताकि वो इजीली सीन हो सके किसी और वेसल के द्वारा. Now coming to point B, when a pushing vessel and a vessel being pushed ahead or rigidly connected in a composite unit, they shall be regarded as power driven vessel and exhibit the lights prescribed in rule 23. Means कि अगर कोई pushing vessel है या कोई वेसल पुश हो रहा है और वो दूसरे वेसल से रिजिडली कनेक्टेड है एंड ऑब्वियसली दे शैल बी रिगार्डेड एज अ पावर ड्रिवन वेसल, और जो वेसल के लाइट्स होंगे जो रूल 23 में प्रेस्क्राइब किया गया है उसके अकॉर्डिंग होगा. सो इस लाइन को अच्छे से समझने के लिए वी शुड गो टू पॉइंट सी. नाउ कमिंग टू पॉइंट सी, अ पावर ड्रिवन वेसल व्हेन पुशिंग अहेड और टोइंग अलोंगसाइड एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अ कंपोजिट यूनिट शैल एक्सिबिट फर्स्ट, instead of the light prescribed in rule 23A first or A second, two master lights in a vertical line. Second, side light. Third, a stern light. So in this diagram you can see that it is tugboat, और अगर ये alongside push करता है या किसी power driven को push करता है तो इसके पास दो master light होंगे, साइड लाइट्स होंगे और इसका स्टर्न लाइट होगा. एंड यू कैन सी दैट देयर इज नो एनी येलो लाइट बिकॉज इट इज नॉट अ टोइंग वेसल एट दिस टाइम. इस टाइम पे वो और किसी वेसल को पुश कर रहा है. कमिंग टू पॉइंट डी, अ पावर ड्रिवन वेसल टू विच पैराग्राफ ए और सी ऑफ दिस रूल अप्लाइज शैल आल्सो कंप्लाई विद द रूल 23A सेकंड. सो अगर कोई टग बोट है एंड दैट इज ऑल्सो अ पावर ड्रिवन वेसल, सो अगर वो 50 मीटर से कम नहीं है सो उसके पास भी एक और सेकंड मास्टेड लाइट होगा विच विल बी हायर देन द फॉरवर्ड मास्ट, और यही रूल 23A सेकंड कहता है. Now coming to point E, a vessel or object being towed other than those mentioned in paragraph G of this rule shall exhibit. अगर कोई vessel tow होता है तो वो क्या शो करेगा? Side light and stern light. And if the length of the tow exceeds 200 meter, जो vessel tow हो रहा है that will show diamond shape, और वो vessel के उस पोजीशन पर रहेगा जहाँ से किसी और वेसल को इजीली दिख सके. सो इन दिस डायग्राम देयर इज टोइंग वेसल और वो पावर ड्रिवन वेसल को टो कर रहा है. ऑब्वियसली उसका लेंथ 200 मीटर से ज़्यादा है तो टोइंग वेसल 3 मास्टर लाइट पसेस करेगा और उसका एक साइड लाइट होगा और स्टर्न लाइट होगा, और ऑब्वियसली इट इज टोइंग वेसल तो उसके पास स्टर्न लाइट के ऊपर येलो लाइट भी होगा. एज इट इज टोइंग अ पावर ड्रिवन वेसल तो पावर ड्रिवन वेसल के पास मास्टर लाइट होता था, बट एट दिस टाइम वो टो हो रहा है तो उसके पास मास्टर लाइट नहीं होगा, सिर्फ उसके पास साइड लाइट्स होंगे और स्टर्न लाइट्स होगा. नाउ कमिंग टू पॉइंट F, provided that any number of the vessel being towed alongside or pushed in a group shall be light as one vessel. First, a vessel being pushed ahead not being part of a composite unit shall exhibit at the forward end side lights. अगर कोई वेसल पुश हो रहा है तो वो अपने फॉरवर्ड एंड पे साइड लाइट शो करेगा. सेकंड, अ वेसल बीइंग टोड अलोंगसाइड शैल एग्जिबिट अ स्टर्न लाइट एंड एट द फॉरवर्ड एंड साइड लाइट. अगर कोई वेसल अलोंगसाइड पुश हो रहा है तो वो अपना स्टर्न लाइट शो करेगा और फॉरवर्ड एंड पे साइड लाइट शो करेगा. सो इन दिस डायग्राम द टोइंग वेसल इज पुशिंग सम वेसल, जो वेसल पुश हो रहा है उसके फॉरवर्ड एंड पे साइड लाइट शो हो रहा है. एंड इफ द टोइंग वेसल इज पुशिंग अलोंगसाइड तो जो वेसल अलोंगसाइड पे पुश हो रहा है वो स्टर्न लाइट शो करेगा और फॉरवर्ड एंड पे साइड लाइट शो करेगा. नाउ कमिंग टू पॉइंट G, an inconspicuous partly submerged vessel or object or combination of such vessel or object being towed shall exhibit first, if it is less than 25 meter in breadth, one all around white light at or near the forward end, one at or near the after end, except that dragons need not to exhibit a light at or near the forward end. Coming to second point, if it is 25 meter or more in breadth, two additional all around white light at or near the extremities of its breadth. And the third one is, if it exceeds 100 meter in length, additional all around white light between the light prescribed in subparagraph 1 and 2nd, so that the distance between the lights shall not exceed 100 meters.
And the 4th point is a diamond slip or near the aftermost extremity of the last vessel or object being towed, and if the length of the tow exceeds 200 meters, an additional diamond safe where it can best be seen and located as far as forward as practicable. So इन चारों पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए let's see a picture. Here we are talking about partly submerged vessel. तो अगर वो 25 मीटर से लेस है तो वो अपने फॉरवर्ड और आफ्ट एंड पे ऑल अराउंड वाइट लाइट शो करेगा. And if the breadth of this submerged vessel is greater than 25 मीटर तो उसके ब्रिथ के एक्सट्रीमिटीज पॉइंट पे दो ऑल अराउंड वाइट लाइट शो करेगा. सो इफ द लेंथ ऑफ सबमर्ज्ड वेसल इज ग्रेटर देन 100 मीटर देन वी विल यूज एडिशनल ऑल अराउंड वाइट लाइट. उसके ब्रेथ के एक्सट्रीमिटीज पॉइंट पे हम दो एडिशनल ऑल अराउंड वाइट लाइट यूज करेंगे विच शुड बी इन बिटवीन ऑल अराउंड वाइट लाइट्स विच इज एट फॉरवर्ड एंड आफ्ट एंड ऑफ दिस वेसल. एंड इस वेसल के जो ब्रेथ का एक्सट्रीमिटीज पॉइंट है और जो दोनों ऑल अराउंड वाइट लाइट है उन दोनों का बीच का डिस्टेंस 100 मीटर से कम होना चाहिए. नाउ कमिंग टू पॉइंट H, where from any sufficient cause it is impracticable for a vessel or object being towed to exhibit the light or shape prescribed in paragraph E or G of this rule, all possible measures shall be taken to the light the vessel or object towed, or at least to indicate the presence of such vessel or object. So this one is the exemption कि अगर कोई disabled vessel towed हो रहा है so that will not follow this rule. Obviously that is disabled vessel, so there will be no any lights. So in that situation we should take all possible measures, illumination flares, radar, telephone, हमें वो सभी possible measures use करना चाहिए so that other vessel can see that this disabled vessel is being towed. Coming to point I, where from any sufficient cause it is impracticable for a vessel not normally engaged in towing operation to display the lights prescribed in paragraph A or C of this rule, such vessel shall not be required to exhibit those lights when engaged in towing another vessel in distress or otherwise in need to assistance. All possible measures shall be taken to indicate the nature of the relationship between towing vessel and the vessel being towed as authorized by Rule 36, in particular by eliminating the tow line. If there is a vessel जो कि नॉर्मली इंगेज नहीं होता है टोइंग ऑपरेशन में, अगर वो किसी डिस्ट्रेस वेसल को टो करता है तो वो ज़रूरी नहीं कि इस रूल के पैराग्राफ ए और सी को फॉलो करे और अपने लाइट को शो करे. बट द वेसल विच इज टोइंग दैट शुड डू ऑल पॉसिबल मेजर्स shall be taken to indicate the nature of relationship between the towing vessel and the vessel being towed just by eliminating the tow line. Now this comes to the end of Rule 24. I hope you guys liked it. If you have any doubt, just comment it below. Please do share and subscribe. Thank you.